gets conveyed more easily. So as I was thinking, listening to Singh ji, what does a translator achieve? Gets an empathy with the characters. They become more real to your lived context. In a democracy like ours, translations are very important because it gives us a glimpse into the lives of people who live in a totally different part. मणिपुर से जो आते हैं वो केरला के लोगों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. तो translator, when he reads, he goes through all these things. I'm saying these things कि आप अपने जब भी अपना when you place your presentations, थोड़ा इन सब aspects को अगर ध्यान में रखते हुए थोड़ा modulate कर ले, then translator gets an identity. Some people become known as translator of so and so. ये भी देखा गया है. Translation of text into film वो तो डायरेक्टर को एक नई पहचान दे देती है, पर किताबों में भी जब ट्रांसलेशन होकर आती है तो it gives a new identity. So how does that help? Does it give a purpose to the translator? And एक और aspect in today's world we have to keep in mind, how should a translator be compensated? उनको, should there be a fund they can tap into, because translation is a very serious and full-time thing which most people today cannot think of as a profession, because there is generally no money for translators when they start out. Or finally, translator की loyalty किसके प्रति होती है? To the writer or to the creation of the writer? To the characters and the situations, or to the language that the writer has used? Loyalty kiske prati? Who should we pay more attention to? With that, I'll ask, sorry, madam. Hello, madam. Ratnamji, we share our Ratna in our names. Would you like to sit and talk from here, or would you like to read? But I'm going to again call you. Alert you. You want to read, please come, but I'm going to alert you 6 minute के बाद 8 मिनट से ज़्यादा समय. मंच को सादर नमन और सामने बैठे हुए प्रबुद्ध साहित्यकार सभी को मेरा नमन. और वैसे ही यहाँ आपके सामने खड़े होकर 2 शब्द बोलने का जो अवसर मुझे साहित्य अकादमी ने प्रदान किया है, उसके लिए मैं साहित्य अकादमी के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ. आज का विषय है अनुदित कृतियों को पढ़ने का महत्व. अनुदित कृतियों को पढ़ने का महत्व जो विषय है, इसके पहले भी अनुवाद के सत्र 2-3 रखे गए हैं, और आज अनुदित कृतियों का अध्ययन करने का महत्व. यदि अध्ययन ही नहीं करते हैं तो अनुवाद का क्या उद्देश्य होता है, कैसे सफल होता है? अनुवाद का कार्य ही भावात्मक एकता को साधने के लिए और हमारे साहित्य को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए, हमारे साहित्य को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए हम अनुवाद करते हैं. इसका मूल उद्देश्य वही है, क्योंकि वरना अनुवाद कला ही नहीं होती तो हमारे जो विचार है, संस्कृति है और जो स्वदेश्य होते हैं, ये सब हमारे सीमा तक ही रह जाते हैं. इसलिए यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम विश्व स्तर तक हमारी रचनाओं को या हमारे साहित्य को पहुँचाने के लिए, हमारी संस्कृति को भी वहाँ तक पहुँचाने के लिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अनुवाद भी हम करते हैं. ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका
जो निभाती है अनुवाद आज की कला नहीं है, बहुत पहले से शुरुआत से आप ले ले तो अनुवाद सक्षम रूप से चलती आ रही है। लेकिन उसका सैद्धांतिक पक्ष आजकल लोग उसके सैद्धांतिक पक्ष पर सोचने लगे, उसके लिए अनेक सिद्धांत निकले हैं। लेकिन आप देखिए हमारे तेलुगु साहित्य को ही ले लीजिए, मैं तेलुगु भाषी हूँ, तेलुगु साहित्य को ही ले लीजिए। महाभारत जो संस्कृत में लिखा गया है उसको 3 कवियों ने तेलुगु में अनुदित किया है। लेकिन हमारा जो महाभारत है आज नन्नय्या तिक्कना और एर्रा प्रगड़ के महाभारत है, संस्कृत का महाभारत को नहीं लेते हैं। माने बोधगम्य है, सभी को उनमें जो लिखा गया है हम समझा सकते हैं। इसलिए अब जो पढ़ते हैं अध्ययन की महत्व के बारे में कहना है तो आज जो पढ़ते हैं संस्कृत में कितने लोग पढ़ सकते हैं? अनुवाद में जो किया गया है महाभारत उसी को पढ़ करके समझ सकते हैं, उसकी जो महत्ता है, उसमें जो मूल्य है और सामाजिक तत्व है, राजनीतिक तत्व है, ये सभी हमें बोधगम्य होता है अनुवाद के माध्यम से। माने स्तरीय पुस्तक, इसे हम अनुवाद नहीं कहते हैं। तेलुगु महाभारत कहा माने नन्नय्या का नाम लेते हैं। वैसे ही पोतना जो महाभारत के प्रणेता है वो पोतना का नाम लेते हैं, संस्कृत का नाम नहीं लेते हैं। इस तरह आज जो पहले से जो अनुदित हुए थे उन्हें आज सारी भारतीय भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से ही लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। ऐसी स्थिति में अनुवाद को दोहम दर्जे की कला मानना ठीक नहीं है मेरे मंतव्य से। लोग कहते हैं कि हमेशा मूल लेखक का नाम लेते हैं लेकिन अनुवादक का नाम नहीं लेते हैं, ये सही नहीं है। मूल लेखक जो है अपने मन में जो बात आती है उसे सही ढंग से आपके सामने या समाज के सामने या पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन अनुवादक ऐसी नहीं है। माने मूल लेखक की जो वेदना है, जो विचार है, जो भाव है, उसे आकलन करके वो पाठकों के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है। और उस भाषा की संस्कृति, वो प्रादेशिक परिसर, वातावरण, इन सभी से परिचित आचार विचार रीति रिवाज, इन सभी को जाने बिना मूल कृति का अनुवाद नहीं कर सकता, करने पर भी वो सफल नहीं होता है। इसलिए ऐसे रचनाकार आज जो विश्व बंधुत्व की भावना से विश्व, क्योंकि आज वैश्वीकरण की दिशा में हम चल रहे हैं, ऐसे वैश्वीकरण की दिशा में हम चल रहे हैं, हमारी भाषा को वहां तक पहुंचाना जरूरी है। इसलिए आज अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए अनुदित पुस्तकें जो होते हैं उन्हें पढ़ने से ही आप लोग हर एक प्रांत की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, साहित्य है, उसे समझ सकते हैं। और जातिगत विभेदों से, प्रांतगत विभेदों से हम मुक्त भी हो सकते हैं। एक राष्ट्रीयता, आत्मीयता और विश्व बंधुत्व की भावना को हम स्थापित कर सकते हैं। और 10 मिनट हो चुका है, मैं जरा याद दिला रही हूँ। 10 मिनट हो गया। This is what I said. This is a very onerous task, but I have to keep reminding him. ठीक है। अनुवाद प्रत्येक भाषा की गरिमा तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से परिचय की आवश्यकता को अन्यथा आवश्यकता को समझाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि अनुवाद के माध्यम से ही हम अपने विचार को वहां तक पहुंचा सकते हैं। और अध्ययन की महत्ता के बारे में और एक बात कहूंगी। आज मैंने
पुराने जमाने से, प्राचीन काल से जो आ रहे थे वो अनुदित हुए थे। आजकल जो हो रहे थे, साहित्य ही नहीं साहित्येतर अनुवाद भी हो रहे हैं, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया में हम चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम इन अनुदित ग्रंथों को या पारिभाषिक शब्दावली को जाने बिना अनुवाद भी नहीं कर सकते। और अनुवाद किए गए कृतियों में जो त्रुटियां हैं, जो अच्छाई है, भलाई है, कैसे उस प्रांत की संस्कृति को ला पाए हैं, इस प्रकार के विषयों को जानने के लिए पुस्तकों को पढ़ना जरूरी है। तभी तो हम हर एक प्रांत के संस्कृति से और वहाँ के रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। और वैसे क्योंकि समानार्थी समान रूपी शब्द भी है हर एक भाषा की, और वैसे ही समान रूपी भिन्नार्थी शब्द है। उदाहरण के लिए मैं एक शब्द को ले लूं, तेलुगु में उपन्यास माने भाषण है, वही हिंदी में उपन्यास माने नावल होता है। इसलिए ऐसे समान रूपी समानार्थी शब्द को और समान रूपी भिन्नार्थी शब्द को जाने बिना, पारिभाषिक शब्दों को जाने बिना हम अनुवाद भी, साहित्येतर अनुवाद या साहित्य का अनुवाद जो भी सोचिए, नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन शब्दों से, उन शब्दावलियों से परिचित होना, वहाँ की संस्कृति से परिचित होना और आकलन करना, रचनाकार के मूल रचनाकार को आकलन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं अनुवाद के लिए। समय सीमा को दृष्टि में रख करके मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी मंच का आदर करना चाहिए, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी शांति से मेरी बात को सुने हैं। थैंक यू। Many thanks, Sesharatnam ji. May I now request Rana ji to come to the podium if you would like to, or if you want to. आपको भी फिर याद दिला रही हूँ, समय सबके लिए निर्धारित किया है, 8 मिनट में अगर हो सके, otherwise I would request you to speak rather than read. Respected Chairman, Madam, respected participants, scholars and writers, all of you, good morning. I would like to give a presentation on the topic, the importance of reading the translation works. According to Jose Saramago, a celebrated author, writer builds national literature, whereas translators construct world literature. This highlights the significance of translation, making it the most crucial and magnificent task of all. The translated books introduce us to the thoughts, values, and the traditions of various cultures and countries. These books provide us with a new perspective on the world and broaden our thinking. The importance of cultural exchange. Cultural exchange is a process that enables people from different cultures to the interact, learn from each other, and appreciate each other's perspectives. This process provides us with the opportunity to learn about various cultures and understand our own culture better. The role of translation in cultural exchange, the translation plays a vital role in cultural exchange. Through translation, we can learn about various cultures, facilitating communication and understanding between
people from different cultural background. Cultural exchange is translation is essential. It provides us with the opportunity to learn about various cultures and understand our own culture better. Translation serves as a bridge between cultures, facilitating communication and understanding between people from different cultural backgrounds. The translated works provide us with the knowledge on various subjects. These books give us information on science, history, literature, and other subjects. This is uh, this is creation or knowledge and enable us to understand the world better. Translation plays a vital role in the improving of language skills. Through translation, we can learn new languages, understanding their grammar, vocabulary, and pronunciation. Translation help us to strengthen our language skills, communication with others, and achieve our goals. Improving language skills through translation is an essential process. This process helps us to learn new languages, strengthen our social relationship, and advance our careers. Translated books introduce us to various literary styles and genres. These books tell us about the literature of other countries and help us to increase our literature understanding. This enables us to understand literature better and increase our literary appreciation. Translated books introduce us to various cultures, languages, and subjects. These books help us to increase our knowledge, literary understanding, and the importance of the translated books is immense, and we should be encouraged to read these books. Uh, Translation plays a vital role in enhancing literary understanding. Through translation, we can become familiar with various literary styles. Uh, Translation help us to better comprehend literary works and understand their meanings and message applied to them to our lives. Enhancing literary understanding through translation is very important. This process help us. Uh, Translated works introduce us various cultures, languages, subject. These books help us increase our knowledge. Therefore, the importance of translated books is an immense, and we should be encouraged to read these translation works. The translation works, Sahitya Akademi highly encourage to the translators to publish their books in their respective languages. We should appreciate the initiative taken by Sahitya Akademi, New Delhi, is of his historic and significance. This is an important campaign. This thinking holds long-term significance. Thank you. Thank you, Rana ji. In such a short time, you've really given us the importance of translating into a language that is off the mainstream, that is less known, less heard. I will now come to Sarin ji, and I would request her to share her experience, because धन्यवाद। Dogri again is a language which has been a bridge between धन्यवाद। जय माता दी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम मंच पर बैठे हुए हमें सब अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, तो ट्रांसलेशन की महत्ता हमें समझ में आ गई।
अनुदित कृतियों को पढ़ने का मतलब दूसरी संस्कृतियों को समझना है और उनसे तालमेल, उनसे रूबरू होना है। हाँ जी, ठीक। विश्व का साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य, मातृभाषाओं के साहित्य के विकास में सदा ही अनुवादक एवं पाठक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनेक भाषा भाषी समाजों को प्रेरित और पुनर्जीवित किया है। हम देखते हैं कि कुछ उत्कृष्ट अनुवाद तो मौलिक रचना का दर्जा पा जाते हैं और कहीं उससे भी बढ़कर हो जाते हैं। तो मैं अगर पाठक और अनुवाद की बात करूंगी तो मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, थोड़ा सा जनरल नहीं करके जम्मू कश्मीर की बात करूंगी। इसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, खासतौर पर जम्मू डोगरा तथा डोगरी भाषा की। जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू प्रांत में रहने वाले लोग साधारणतः डोगरा कहलाते हैं और कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी। डोगरी भाषा इनकी भिन्न भाषा है और इनकी सत्ता भी अलग है। डोगरी भाषा का जो वजूद है हमें अमीर खुसरो जी की किताब 1319 में जो छपी थी उसकी कविता में डोगरी भाषा का उल्लेख आता है। पर आम द्वारा डोगरी भाषा सिर्फ बोली जाती थी। डोगरी भाषा बोलने का डुग्गर क्षेत्र, हमारा डुग्गर क्षेत्र सारा है और इससे पहले सीमाएं बहुत बड़ी थी। इसमें हिमाचल प्रदेश भी आता था, पाकिस्तान में जो इलाका चला गया है वो भी आता था। वो सारे इलाके में डोगरी ही बोली जाती थी और मैं ये कह सकती हूँ कि डोगरी के अलावा कोई भी भाषा वो लोग नहीं जानते थे। हिंदी और इंग्लिश को तो वो बिल्कुल नहीं जानते थे। और पर ये सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि डोगरी भाषा में लिखते नहीं थे। साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा जाता था और अगर थोड़ा बहुत इतिहास अगर लिखा गया है तो वो उर्दू या फारसी में लिखा गया, डोगरी में नहीं लिखा गया। और सबसे बड़ी महत्ता तो मैं डोगरी वालों डोगरी डुग्गर प्रदेश में जानती हूँ कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने तो अनुवाद पढ़ के ही हम अपना साहित्य लिखा और इतना उत्कृष्ट साहित्य लिखा। तो 1930 से पहले हमें डोगरी की कोई भी किताब हमें नहीं मिलती डोगरी भाषा में। शायद इसको साहित्य लिखने के लायक नहीं समझा गया। राजे महाराजाओं ने इस पे बहुत अपनी लिपि पे उस पर थोड़ा सुधार किया, उसको थोड़ा सा ठीक किया, उसमें आधुनिकता लाई। पर फिर भी थोड़ा उन्होंने कहा कि जो डोगरी नहीं बोलेगा, डोगरी में एप्लीकेशन नहीं देगा तो उसको जुर्माना दिया जाएगा। फिर इस तरह के डोगरी में जो निज़म है उनको डोगरी में ट्रांसलेशन करवाया और बहुत सारी किताबें रामायण, महाभारत, गीता को डोगरी भाषा में ट्रांसलेशन कराया। वो अनुवाद लोगों ने एक तरह से जो डोगरी भाषा डोगरे लोग हैं उनको एक पाठक मिले, उनको पढ़ने के लिए कुछ मिला डोगरी भाषा में। पर ज्यादा कविता, कहानियां, गीत, कविता आदि गढ़े जाते थे लोगों द्वारा, आम लोगों को द्वारा गढ़े जाते थे पर लिखे नहीं जाते थे, किताब रूप में हमारे सामने नहीं आते थे। वो सिर्फ कह सकते हैं कि वह सारा लोग प्रकाश किताब रूप में प्रकाशित नहीं होते थे, वह सारा साहित्य लोकगीत, लोक कथा, कारका, बारह के रूप में लोक साहित्य में घुल मिल जाता था। भारत की दूसरी मातृभाषाओं की तरह शिष्ट साहित्य के साथ साथ डोगरी लोक साहित्य भी समृद्ध होता गया। हमारे यहाँ लिखित साहित्य की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं है बेशक, पर इस धरती पर विद्वानों और चिंतकों की कमी कभी नहीं रही। उनका ही कमाल है कि हमारे पास लोक साहित्य का खजाना बिखरा पड़ा है, जिससे हम अपने अतीत की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के पास हजारों शताब्दियों से उनकी जीवा पर धार्मिक, सांस्कृतिक, तीर्थ स्थलों के संबंधों में लोक गाथाएं, लोक वार्ताएं तथा जनश्रुतियां नाच रही हैं। माना जाता है कि इनका जन्म अपनी अपनी विशेष घटना के घटित होने पर ही हुआ होगा। डोगरी भाषा को लोक गाथाओं, लोक गीतों, कारकों, दंत कथाओं तथा जनश्रुतियों के मूल में कई ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के अंश छिपे हुए हैं। आज भी किसी तरह की भी खोज पड़ताल, अध्ययन, अनुसंधान के संदर्भ में परंपरागत जनश्रुतियां, लोक गाथाओं एवं लोक गीतों का सहारा लिए बिना शोध कार्य वहाँ अधूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं गया। तो जैसे हमारे बहुत सारे पांडव, क्या माना जाता है कि जम्मू कश्मीर, जम्मू की पहाड़ियों में पांडव अज्ञातवास में वहाँ रहे थे। तो हमें पांडवों की बहुत सारी लोक गाथाएं मिलती हैं वहाँ। फिर उसके बाद गोरखनाथ जी आए, तो जिसका संबंध वैष्णो देवी से भी है। तो गोरखनाथ जी की गाथाएं, हमें बेशुमार गाथाएं मिलती हैं, पर लिखित रूप में हमें कुछ नहीं मिलता। जैसे हमारे यहाँ लोक नायक हुए हैं, बाबा जित्तो जी हुए हैं। तो बाबा जित्तो हमें वैसे तो हम सौभाग्यशाली हैं या फिर विडम्बना है हमारी कि उनके बारे में एक भी शब्द हमें लिखा नहीं मिलता। उन्होंने किसानों के लिए, आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते वो आखिर में उनकी मौत हो गई।
पर वो सारा कुछ उनका कब जन्म हुआ, कब मरे, वो कब उनके बीच में क्या क्या घटा, सब कुछ हमें लोक कारकों में ही मिलता है। हमें आज हमने जब किताबें प्रकाशित की हैं तो सिर्फ उस कारकों को आधार मानकर हमारी किताबें वहाँ प्रकाशित हुई हैं। तो अनवित, और मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ तो जो हमारे आज इतने अच्छे अच्छा लिख रहे हैं, और जो उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, और कविता लिखते हैं, वो सब लोगों का अगर वजूद अगर है और हम यहाँ बैठे हैं अगर, तो सब अनुवाद की ही वजह से, उसकी ही मत्ता की वजह से। और हम अनुवाद ही तो हमें दूसरी संस्कृतियों से रूबरू कराता है। अगर किसी ने जम्मू की पहाड़ियों को समझना है, जम्मू वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियों को समझना है, वहाँ की जीवन शैली को समझना है, वहाँ के रहन सहन को समझना है, तो हमें बाकी प्रदेशों के लोगों को हमें अनुवाद ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं शायद ज्यादा ही बोल गई हूँ। तो उस अनुवाद की हमारी महत्ता को हम कभी नकार नहीं सकते हैं। तो मैं समझूंगी कि हम अगर सभी प्रदेश अपने अपनी अनुवादों को पढ़ें, और हम तो समझ ही रहे हैं। मैंने अभिजात्री उपन्यास एक किया था असम का। वो उपन्यास जब मैं कभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उस उपन्यास को मैंने ट्रांसलेशन किया डोगरी में, और आज भी वो अपने वो एक चरित्र पे था, और उस उपन्यास में लेखिका ने शायद इतनी अच्छी तरह से एक चरित्र का निर्माण किया है। चंद्र प्रभा नाम की वो एक समाज सुधारक थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी, और उनको शायद 1975 में उनको पद्म श्री भी मिला। और 1900 से लेकर उन्होंने अपनी सारी यात्रा को, जो उसकी यात्रा को साथ साथ उसके रहन सहन, खान पीन, जीवन शैली, उसके पोशाक, वो सारा कुछ हम रूबरू हुए। और मेरी हमेशा इच्छा होती है जब भी मैं कभी महिलाओं में बोलती हूँ कि उस उपन्यास का, उस कैरेक्टर का जिक्र करूँ। तो ये अनुवाद का ही तो है अद्भुत। हम अनुवाद को ही तो अद्भुत मानते हैं। अनुवाद से ही हम बाकी संस्कृति को समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। आशीष, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सरीन जी। आपने सही में बहुत सुंदर ढंग से ये जो connectivity increases through translation, and translations establish that humanity is one family, and like different members of the family are the different languages, and humanism is the one binding force. Translation establishes that. May I request अभी आप इस अरविंद जी, आप अपना फोकस आप बना लीजिए। नमस्कार मैडम सेनगुप्ता जी एंड एवरीबॉडी। सबको मेरा नमस्कार। खास तौर पर सुरभि सफरू को, शी हैज स्पेशली कम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ट्रांसलेशन वर्क। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जो पहले ही बोली गई है ट्रांसलेशन के बारे में। तो मैं स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेचर के बारे में बात कर लूंगा, और उसमें भी एक स्पेसिफिक एरिया की ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री। So I'll skip all my pages and I'll directly come to translation of poetry, क्योंकि ट्रांसलेशन पे बहुत बात हो रहे हैं, तो हर कोई इसका जो बात कर रहे हैं वैल्यूबल बातें हैं। तो ट्रांसलेशन लिटरेचर का थोड़ा, I call it classical translation, because when you translate a poem, there are so many disciplines of writing a poem, and then a translator has to be very sensitive to the disciplines of a poet, disciplines of the poem, and discipline of the subject. Only then he can translate a poem. I will directly read some points I have located. I have classified how poetry can be translated. I will skip everything. I will directly come to the points that I have highlighted how to translate a poem. First character of translating poem is to gather the sensitivity of the original. I will give illustrations for everything when I give an example. I will read a translation of Atal Bihari's poem, and all these translations are done by me. Whatever translations I read, I will read only the translation, not the original. I will read only just one paragraph. A new song do I sing, dipping stars burst a sipping song, stone chests sprout new hope strong, pale dress of plants is shed, cuckoo sings dark, night is no more to dread, I can see dawn brings luminosity to bring, a new song do I sing. Who is to heed to broken dreams, misery traversing the soul, I speak the agony,
I will not give in to accept defeat, nor do I lay a quarreling creed. On the wheel of destiny, I rewrite a link, a new song do I sing. काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ. This is famous, and how it has been translated is no word is picked up directly from his, but still the essence is carried. That is why I say we have to gather this substance. On the wheel of destiny, I rewrite a link, a new song do I sing. Now, second point of translating poetry is that a poet is involved with the subject when he writes the poet, and the translator has to be involved with the subject. I again read a poem translated by me, Atal Bihari Vajpayee. What he writes: restless night to tease, dawn too brings no ease, dark black clouds hover, hopeful birds chirp no longer, body a burden, mind a load, arousing the pains old, all busy in selfhood remain, none to realize others' pain. The poet confined to jail days, pain is to part, he says, so live life all these things, except whatever he brings. This poem he has written when he was in jail during emergency. So there was a sentiment in this. He says the pain of a jail. I have tried to capture the involvement, what was the poet's involvement writing in the jail. I have tried to capture in the translation the same sentiment. So the involvement with the subject is very important once you are translating the poem. Third thing, capacity to go beyond the established rules. Once you are translating a poem, you have to go beyond the established rules, because language in poetry is not framed in the segments of rules, because like poetry has an idiom of its own. I again give an example. Vasudeva Kotam is an one, there are two syllables. That when we had G20 here, it was translated as one earth, one family, one future. So two words were translated into 6 words. What was the reason? Because we went beyond the limitation. Vasudeva Kutam is 2 words, but when it was translated as one earth, one family, one future. That means this message is carried independent of the words. We are not bound by any word. What was the content, what was the message, that was carried out by a while. So this is when a phrase or an idiom or a poem is to be translated. One has to go beyond. Now I'll read a lalwak. Most of you must be knowing the name of Lal Ded. Lal Ded is a poet of Kashmir. She was not known. Nobody had even written her. It was from oral tradition, from one mouth to another mouth. Grierson, one of the greatest linguists of the world, you may be knowing, he came to Kashmir. He collected all the lalwaks, translated them, and once he published them in England, lalwak, in a short span of time, became a universally known poet. So this is the power of translation. Now you go in any country, any language, Lalda is taught in universities. Lalda is so powerful, it is because of translation. Her Lalwak is only 4 lines. I have translated it. I will not read the Lalwak. Let me not waste the time. I have translated it. And there are 4 lines. I'll read the original also. Nabad Atbor. No, I skip it. I'll read the translation part of it. Sweet, you just gather the sense of the lalwak. Sweet life loads of possessions I held by hands with determinations. Heavy got the upload, loose got the handhold, the body frame got bent. Now, upright I cannot stand, but how? What to do, what to say, I do not know. The outway, I lost the word Guru had told, am now in deep agony myself to scold. Shattered, scattered, devastated, and unheard, I am a cattle herd without the shepherd. I am a cattle herd without the shepherd. This was the power of Laldel's. This is all symbolic. If you read even my translation, every word has a connotation to the original. So now the third point of translating poetry is punctuation. Punctuation is a very important character of translation. Had you heard the previous poem, how I tried to put a pause, put a clause, that was just to tell you that here is a comma, here is a colon, here is a dash. So punctuation is very important character of poetry. Another translation creates commitment to the source. I'll read a poem. You have to be
intuition. Once you read a poem, you gather an intuition. The intuition, what must be the state of the mind of the poet when he has written this poem. There's a transcendental relationship between poet and the writer translator. If one is able to establish this transcendental relationship with the poet and his subject, then the translation will become apt. I'll read the translation of a Kashmiri poet. You just listen it. The broken piece of mirror haphazard shines bright on the heap of garbage. A cow walked by, came in, gazed and went past. A dog came in, breathed on it and went past. Now you'll just, your attention. A discreet fool-like soul, draped in rags, strips whole and whole, took it up and fused on her strip, then extended the reach of her possession. By fusing that mirror on her straps, she extended the reach of her possession. What more can be said? A thought that is to be read. This was translation. Now another romantic poem. You see the romance. It's a long poem. I'll read the last paragraph only. Oh dear, be there. Your steps I adore. Hold, just hold, oh dear, to hear me implore. There's a big poem of Mahjur. Mahjur is a great poet of Kashmir. I read the last paragraph only. Neeraj's translation. The closeness between original and the translation. Neeraj, you know, the Hindi poet, the big name. Sleep was yet to go. Sun came up to show. Feet were to tread yet. Life slipped to go spent. ये उनका एक भोला माशूर अभी पैर उठे नहीं थे. I read it. Sleep was yet to go. Go. Sun came up to show. Feet were to tread yet. Life slipped. Life slipped to go spent. Rahat Indori, you people must be knowing. Rahat Indori, his famous couplet. I'll read the translation. Not by any associate, not by any friend or mate. The thorn in our foot will be out only by our effort. This is Rahat Indori's very famous couplet. I'm reading the translation because it's reading of the translation. No need to carry the whole things. Translation has its own dimensions. Sometimes you have to add a couplet, or sometimes so that the sentiment is carried. For instance, Shah Ramzan's famous poem on a mother, I'll see, I have repeated the words, what we call anaphora. This is the technique of repeating the words. He had used the word mother only once, but I have repeated the word mother, and so that there's a feeling of mother is generated. I read the last paragraph of the poem, last stanza rather. Oh mother, dear mother, you shall last long, long and long, all along, till air holds my breath. Your radiance, sense in me, looks after me, keeps care and cheer for my being to be. This is the definition of a mother. Then sometimes words cannot be translated from one language into another language. There's a famous poem of Krishnaju Razdan, Beltai Madal. The title is Bel Madal. This is the title of the poem. I have used the same words. And instead of written the note, the biological words, they are the name of the flowers, specific to Kashmir. I have only written their biological, botanical names at the end. So I use the same vocabulary. Bel, Madal, Vena, and Gulab in a bouquet, I offer to Paramashiva and pray. O Shiva, from your cascading hair flows the Ganga fair. Brahma, Vishnu, and all gods stand in your prayer. I bow in your devotion and pray. Bel, Madal, Vena, Gulab in a bouquet. I have not translated Brahma, Vishnu, and these. I have used the words as such. I have not translated the herbs and this, that. I have written that in footnotes. Yes, now another. A poem is not bound to have a standard expression and definition. I will give a small example. An poshe तेलिए वन पोष. इसका मतलब है जंगल जब रहेगा तभी भोजन रहेगा. There was a translation done by government to this: food is subservient to forests. When I came, they came to me, I changed the translation. I wrote, for foods to be, jungles should be. Instead of writing that food is subservient to forests, I did two translations and they gave it to them. And for foods to be, jungles should be. And another translation, foods will last when jungles will last. Then they changed the translation and used my translation, which they had published. Two more features of translating a poem. Number one, when you translate a religious text, you are not at liberty to do any change because the texts are so strict and defined. When I
Maulul Shab, if some Urdu knowing person is there, there's a poem that's a religious poem, Maulul Shab, Special Night. I had translated it. It was Rahman Rahi who had translated it. But I had to change the text because he told you cannot fiddle with the original text. I will not read the poem, that's a long one. No. Now I'll read when a poem is quite flat. There you cannot disturb this. I read a poem that was written recently by our Prime Minister Narendra Modi ji, and I translated it the same way, flat, nothing, no thought. I read the translation of the poem and then I will see. Uh, तुम मुझको कब तक रोकोगे? This was a poem, most of you must have heard it. तुम मुझको कब तक रोकोगे? I will read the translation. How long you can create a hurdle? How long you can stop me and muffle my pissed soul dreams to fulfill? My pockets keep hopes full. Keep desire to do fulfilling deed, keep desire to do something indeed. I know not to have the intensity of the sun, but find me burn like an oil lamp then, alight, light to radiate, lucence to create. I have not been the tree of the soil in care, irrigated by many a rich river, am the produce of the barren terrain, suckling life from the lifeless grain. I am the inscription on the stone, not to fade away, but a definition of a tomb. How long in your try they can go to break me like a glass in a row? Din, din of humiliations, arrows of distractions cannot deter me to act. I am to say the truth direct. The universe does not keep so many miseries up the sleeve, which I cannot bear. So no giving, no surrender. I keep the depth more than the ocean. How many pebbles you can throw then will pick up and sideline each, find the way, the goal to reach. I have bent to stand upright, upright to stand for the right. Now I do not mean to bend to meet and mean end. I, by desire, have come to face to face, you're no bit of secure, I need to care. Whenever, wherever you thrust me into heats, whatever, will burn all impurities, only to hold and come up, dip pure gold. This is me and my motherland where I stand. This is we and our motherland where we stand. How long can you create a hurdle? How long can you stop me and muffle? Last part is a translator of a poetry must be sensitive to the style of the poem. If a poem is written blank, you have to translate it in a blank. This is my personal view. I don't have. And translating a poem is not writing the purport or writing the meaning. So whenever I translate a poem, I translate it in the same form. If it is in verse, I will translate it in the verse. If it is in blank, I will write it blank verse. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. You've enlightened us on several fronts. Most of all, I had in my mind translating poetry is so difficult. I mean, how can you translate emotions? How can you translate ideas and dreams, which is what poetry is? And when I was listening to you, I was also thinking, how do we translate songs? Again, there are ragas, there are notes, there are strains. So is it possible? But then songs and poetries and proverbs are what make a language what it is. And when UNESCO says that we are losing this language because there are so few speakers in this language, we mourn the passing of poetry and songs. With that, I come to you, Shantanuji. Please, I also request you, and I know you will do that, address other issues in translation that have not been brought to the fore. Thank you. Thank you, Madam. There is nothing much left to speak as a last speaker. I would like to convey big thanks to Dr. Rao for inviting me to this event. The caption of our discussion, that is, importance of reading translated works, can never be
overemphasized. It has often been said that India is a translation zone. There is a saying in Hindi that our water changes every 30 miles and the language changes every 50 miles. So how do we know each other without translation? I can personally say that I have read Premchand from Hindi, you are Anantamurthy from Kannada, Vaikam Muhammad Bashir from Malayalam, Pannalal Patel from Gujarati, Navakanto Bodua from Assamese, Kalindi Charan Panigrahi from Odia, all through translations into either Bengali or English. And why Indian literature only? How could we have read Tolstoy, War and Peace, Dostoevsky's Crime and Punishment, Roma Rolla, Jean Christophe, Albert Camus, a stranger, outsider? If those were not translated into English and eventually in Bengali, we would have remained poorer in our knowledge of literature. Hence, reading translation is must for our mental and intellectual growth. Also, a discovery of newer world, newer thoughts, newer ideas depend largely on translation. I would only give two examples. Before the English-speaking West discovered and promoted the literature of Latin America, did we even know the name of Gabriel Garcia Marquez or Jorge Luis Borges? Now, 1,000 years of solitude is a household name among Indian readership. My second example is Africa. Only after English-speaking Westerners publishers discovered the rich literature of Africa in English translation, we got to know about Chinua Achebe and his Things Fall Apart, Ngugi Wa Thiong'o, and other great African writers. So what I'm trying to tell you here that expansion of our mental horizon largely depends on our access to good translation. Uh, uh, what we know as the Northeast as a distinctive geographic territory, but the distance among the seven sister states, including Sikkim, is quite substantial because a Khashi cannot read Manipuri, a Manipuri cannot read Mizo, a Mizo cannot read Assamese, and the Assamese cannot read Kokborok. However, in recent times, there has developed some amount of proximity primarily through translations and the English writings, which is common language across the states. Also, I can refer to the epics, which become pan-Indian texts through translation in various forms. My sensibility as a translator was largely molded by my long association with the Sahitya Akademi. As I got an opportunity today, I must acknowledge my gratitude to this great institution. Having worked as assistant editor, I dwelt with languages like Assamese, Manipuri, Nepali, Dogri, Rajasthani, English, and Bengali. I was involved in the number of translation activities and workshops, some bilingual, some multilingual. By conducting the workshops and assisting the resource persons and translators, my own interest in translation activity aroused. Initially, there are stray assignments from Sahitya Akademi. Once my credentials as translator established, I started receiving commissioning from other publishers also. However, building the bridge between two linguistic communities should be the motto of a translator. When you read a translated text, you are reading two authors, that of the original and of the translation. And you will be reading some of the best writing from another language and culture. And a good translation is itself a work of art. Reading work in translation is the easiest, most entertaining way to explore a multiplicity of frameworks and approaches, to study a wide variety of writing rhythms and styles. Books from other places expand our literary universe in many ways. Thank you. Thank you so much, Santanu ji. Your work has given you an insight. Absolutely. I mean, not just the time you have left us with time for inviting if anybody has any questions. Otherwise, I also have questions for our erudite panelists.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू द फ्लोर एनीबडी, अजय जी या कोई और अगर कुछ पूछना चाहे। हमारे बीच बहुत सुलझे हुए राइटर्स हैं, और नहीं तो फिर मैं, अच्छा है। उदाहरण के लिए निराला की पंक्ति लेते हैं, धन्य मैं पिता निरर्थकता तेरे हित कहीं कर न सका। हाँ, तो इसका ये है कि निराला जिस जगह सरोज स्मृति पर लिख रहे हैं, अपनी पुत्री पर वो कविता लिख रहे हैं, जिस भाव से जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, एक पुत्री के और समय देहांत होने के बाद जो उनके पास पीड़ा है, जो तकलीफ है, उसे शब्दों में उन्होंने ढाला है। अनुवादक उस भाव को कैसे अनुवादित कर सकता है, जिस भाव से कवि गुजर रहे हैं। मेरे से ये प्रश्न है, मैं उत्तर दूं इसका। देखिए, ये सबसे पहली बात है पोइट्री को अनुवाद करने के लिए कि पोइट्री वाला पढ़ने वाला बंदा एक सेंसिटिव आदमी होना चाहिए टू रीड द पोइट्री। अनुवाद दूसरा पहलू है। पहला पहलू ये है कि आप उस पोइम को, गीत है, जो कुछ है, वो आप पढ़ो। पढ़ने के बाद मैं आपको एक रचना बताता हूँ, उसको फिर एक बीज की तरह अपने मन में बोलो। जो ही आप पोइम आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा एक वृक्ष उग गया है। उस बीज को अपने अंदर रख के आप उसका भी एक वृक्ष उगाओ। तो जब आप उस पोइम का सेंटिमेंट, जो उसकी आत्मा को अपने अंदर बोलोगे, तो एक उसका भी पेड़ निकल आएगा। और सिर्फ भाषा का अंतर होगा। दूसरी बात है, कई लोग ये कहते हैं कि अनुवाद मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो मानव सोसाइटी है सारी दुनिया में है, उनका इमोशन एक जैसा है, उनका थिंकिंग वही है। कोई माँ के मरने का हंसता नहीं है, कोई माशूक के सामने कभी वही सेंटिमेंट्स होते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, एक कल्चर का डिफरेंस होता है, दूसरा लैंग्वेज का थोड़ा बहुत, क्योंकि हैबिट और हैबिटेट उसको बोलते हैं, वो उसके लिए हमको और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हो जाते हैं। तो इसलिए पोइट्री का अनुवाद करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि पोइट्री का अनुवाद करना ज्यादा आसान है, बशर्ते कि आप वो बीज अपने अंदर बोलो और उसका वृक्ष बना। बहुत अच्छा बोला आपने। आप एक और करना चाहते थे? हाँ, बोलिए। You want to speak in English, and do you need a mic? Any whatever you are comfortable. Yeah. So मेरा question थोड़ा it's on a technical level because I'm trying to translate satire, especially गढ़वाली satire into English. Now the thing is with satire, original में तो हंसी आ रही है, लेकिन translation में in fact some people before me have tried to translate the same satire, but it's very bland. So I'm trying to हाँ उसको सही करने की कोशिश करो, लेकिन उसमें किस टाइप के सेंसिटिविटी को मेरे को हाँ जी। देखिए, जो ये सटायर और जोक है, ये कहाँ से आता है? ये आता है अपने कल्चर से, अपने इथिक्स से, अपने क्या कहते हैं, जिस माहौल में आप पले बड़े। वो माहौल जब हम दूसरी, मान लो हम अब कोई शेक्सपियर का नॉवल पढ़ो, वो हम उसको मिसप्रोनाउंस करके ह्यूमर निकालता है, लेकिन हमारे लिए हिंदुस्तान में हर कोई मिसप्रोनाउंस करता है, सो दैट नॉट अ ह्यूमर फॉर अस। तो अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जब आप सटायर को ट्रांसलेट करो, उसको वो सेंसिटिविटी उस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज टोटली बेस्ड एंड एम्बेडेड इन कल्चरल इथॉस ऑफ दिस। तो कल्चरल, जिसको हम हैबिट और हैबिटेट कहते हैं, हम किस वातावरण में रहते हैं और क्या कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको कश्मीरी का उदाहरण दे दूं, त्राट पे तुम पर बिजली कड़के, क्या जब हमने किसी को गाली देनी हो, किसी को बड़ा बुरा बोलते हैं, चपेगी त्राट, तुम पर बिजली कड़के। लेकिन अगर कोई फॉर इंस्टेंस कोई बहुत सुंदर लड़की जाती है, like a lightning, the same word but you cannot translate it, so ये totally different होगा, because वहां हम कहते हैं lightning must strike on you, वहां कहते हैं she is like a lightning, so ये cultural ethos में आप translate नहीं कर सकते हो। So that is the point, satire को translate करना, cultural ethos को लेकर करना पड़ेगा। ये तो May I add to that? बंगाली में शिवराम चक्रवर्ती बहुत ही पॉपुलर, बहुत
जाने माने राइटर हैं और वो बहुत puns यूज करते थे. He used a lot of pun, and again, like satire, pun is Exactly. something that is very language specific. You know, it's very difficult for someone not very deep into the language to understand even the satire. The writer is making fun of something through the use of a word which has two totally different meanings. Definitely. So we come back, and I will conclude with a couple of observations. One is that to translate, the other day, Upamanyu Chatterjee, when he was giving his Samvatsar lecture, he said to translate, it is more important to have a greater grasp of the language into which you are translating, more than the mother language. This can be contested. Someone else said that, you know, we have to know our language more rather than translating. I think I agree with Upamanyu that unless we are able to convey what the author has said, and as Arvind has already elucidated, that particularly in poetry, when we translate, we create. So it's a transcreation. Like a story, like Devdas, our friend Singh spoke about Devdas, has been made into 17 versions of Devdas on film in different languages. Film itself is a different language. So when it is translated, they cannot remain totally loyal to the original. And now what is happening? A story like Kabuliwala, which Tagore wrote, and Tagore passed away before independence. It has been remade this year, last year, where Mithun Chakravarti plays Kabuliwala. And it is made in the same language, Bengali, but it is placed in 1965. So the context, the nuances of the other, the outsider changes. And to conclude, what I have always felt, others have also sort of said the same thing in so many different words. We as readers, हम आपको देख रहे हैं. We as translators, we are scanning your body. We are going under your skin. We are going into your flesh and your bloodstream and trying to bring out the emotion, what's going on into your mind, in your mind. So a translator, so far we used to think of translation as secondary. We don't know who has translated as much as, Saki. I was trying to find out. We came to know about this whole poetry. Then so many other writers from the Middle East, what we call West Asia, Sherazadi, the stories were all orally transmitted, but they are all based in real time, and it was carried by word, by travelers who went on sea or on the Silk Route, which is why so many customs, local customs have got woven into these stories. A translator, when he tries to translate, he has to be loyal to the cultures rather than the words. Thank you. एक सवाल और है. Sure. जरा ऊंचा बोलिए. क्या डिस्कशन रहा इस. हेलो. हाँ, ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन था. सभी जो है लर्नेड पर्सनालिटीज ने जो अपने अनुभव के बुनियाद पर जो रिमार्क्स और अपने जो पेपर्स पढ़े, बहुत ही जबरदस्त थे, इसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन इन सब में एक चीज जो मैंने मिस की वो ये कि आजकल आज के दौर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो इतना बड़ा रोल अदा कर रहा है. हर चीज, जैसे अभी आपने जो जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी की पोयम या मोदी जी की पोयम्स का, ये तमाम चीजें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत क्वालिटेटिवली सुपीरियर अंदाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए
पेश की जा रही हैं, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को असेस करने की भी यहाँ जरूरत है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ इस पे कहना चाहिए था। हालांकि ये ठीक है, जो सेंटिमेंट्स हैं वो उस अंदाज में नहीं आ सकेंगे जैसा आप लोगों ने, एक शायर है जिसे फिराक, रघुपति फिराक ने जो कहा था, एक अपने जज्बात का इजहार किया था कि जरा विसाल के बाद आई ना तो देखे दोस्त, जरा विसाल के बाद आई ना तो देखे दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। अब इस नोयत का जो है क्लासिक ये गजल का शेर है, इसका तर्जुमा हिंदी में या किसी और भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शायद नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये एक हकीकत है। You have made your question pretty clear. Can we go to the answer now? जी, We can continue the conversation if anybody is interested outside the room also. Subsequent. नहीं, आप अपना आंसर दे दीजिएगा। That is called linguistic logic. एक हम बैंक बनता है, जो भी आप लिखते हो फिर वो वर्ड्स वहां से चूज करता है, तो करता है, तो वो ट्रांसलेशन पोइट्री में पॉसिबल नहीं है। इट कैन राइट द पर्पट, आप शराब पी लो कि वो कहेगा अब यू ड्रिंक वाइन, लेकिन वो शायर का मतलब ये नहीं होता है कि आप शायर। सो हाउ मशीन ट्रांसलेशन वर्क्स, अभी टाइम कम है, आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट विद एग्जांपल। व्हाट्स लिंग्विस्टिक कॉर्पस उसको बोलते हैं। कंप्यूटर गैदर्स अ लिंग्विस्टिक कॉर्पस एंड देन सबस्टिट्यूट्स वर्ड्स फ्रॉम हियर। Poetry cannot be translated by that. Administrative work, scientific work, because they have a word corpus. वो उधर से उठा के इधर लाते हैं। तो artificial intelligence cannot do translation of poetry, especially ऐसी poetry जैसे आपने बोला, क्योंकि उसके पास वो word corpus नहीं होता है। जी जी। Chair beautifully put the essence of the discussion by saying transcreation. Transcreation is a beautiful way to explain translation. और मुझे लगता है कि अनुवाद सरहदें पार कर आता है, और जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो एक गाना, हम कविता के ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। इतना सुंदर ट्रांसलेशन चाहे अंग्रेजी में गाया जाए चाहे हिंदी में गाया जाए, दिल को लुभाता है। और भारत तो वैसे ही भाषाई विविधता का देश है, और यहाँ पर हम 50 से अधिक भाषाओं का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, and this makes this discussion even more significant. Big thank you to the chair for keeping it so tight and on the track, and thank you all the speakers for your valuable insights. May I request you all to kindly come forward ahead of these tables and gather for a group picture. And with this, we conclude this session now today, and we shall assemble again here at 2:30 for our next session. Till then, take care.